तो हमने दो वेरिएशंस तो देख लिए, अब कल्पना जी हमें और मैजिक दिखाने वाली है। रेट्रो स्टाइल में थोड़ी और वेरिएशन। कल्पना जी आप इतनी वेरिएशन सोच कैसे लेती हैं? That is God's gift. And I'm always creating my own new style. That's why So I have to do that's it. how I do it. Wow. Now, आपको जरा Now, sometimes our कभी-कभी हमारी client, client, sometimes कभी our हमारी bride, bride हमको she tells us to कहती है कि give हमको the veil in पल्लू her हाथ में hands. दो। So इसको I मैं will teach किस you तरह से how हाथ में to देना do है, that. You वो can hold पल्लू the आपको veil in the सिखाऊंगी। hands. Okay. I've मैंने also मेरे shown coffee many table book में भी variations काफी in the retro variations style in my retro coffee में table दिखाए book हैं। also. One round again. Same way. Do the Make pallu the veil pleat. pleats. That is That five is and a 5.5. half. Small. 5 to 6 feet. 3, 4, 5. This is 6. And then after the clip. Set the pleats nicely. मुझे तो I रेट्रो didn't का know भी a स्टाइल single नहीं आता style था और of आपने retro, मुझे and you 3 showed me वेरिएशन 3 सिखा दिए। variations. It's my pleasure. 3, 4, 5, 6. 5, 6. I मेरी have app shown में this भी मैंने retro retro style in my दिखाया app है। also. Learn Learn Sari. क्लिप After करने के clipping बाद it, फिर आपने then you इसको yeah, because because it secure हो remains जाती है। secure. Now Now if I put it down, it won't spoil the pleats. pleats. Right. Again, I'm taking 4 pleats. And just tuck it up. Remove the first pleat. Make it broad. जैसा कि हमने दो और बाकी स्टाइल में भी बताया है, every time after थोड़ा हिस्सा निकाल के उसको बड़ी प्लीट में कन्वर्ट make a करना है। bigger Broad broad pleat pleat इसको it बोला is जाता called है। Broad broad pleat. pleat. तो So क्या what है, happens bulge is that कहीं you won't लगता feel a नहीं bulge है, over here आराम and से easily रह the जाती pin है। stays उसके and बाद then यहाँ after पे that you ये have pin to put a pin एक pleat after छोड़ के leaving डालते हैं one तो pin pleat, दिखती then नहीं the है। pin is not visible. So now secure it's हो गई secure. हमारी Up please. उसके After बाद that, I'm I'm taking round. a round. Same way slanting round. Same way. One round is yeah, complete, one no round second second round. round. Second Then round. again you have to go for you have to again go for slanting again. round. It's a slanting round. इसमें In मैं this, I खाली will 3 ही only take round 3 होंगी rounds कि because I मुझे have to पल्लू give the को veil हाथ in में the देना है। hands. That's why. Then Now I'm I'm holding this. एक After राउंड लेने taking के one बाद round, you आप have अपने to put shoulder पे the डाल veil on दीजिए। the shoulder. हमने You've एक taken राउंड one लिया, round, एक ही just round and लिया। after that put it on the shoulder. एक राउंड ही Just लिया took राउंड one लेने round के for लिए the क्योंकि heck of अपने it को हाथ because में we चाहिए need है। this in our So I hand. want So the I want the veil should a be little longer. And then ये we पिन just लगा pin it देंगे over here. यहाँ। So border then the border अच्छे से will दिख be जाती clearly है। visible. The Chest chest border. border. ये This जो pin पिन that लगाया I put है up here, ये थोड़ा this पीछे is लगा a है पर little मैं at आपको the एक back. बात But I बोलना want to चाहती tell you हूँ one thing कि अगर that आपके if आपको every woman हर महिलाओं should को have 3 types प्रकार of की pin with पिन her, रखनी a चाहिए। very big सबसे one, बड़ी a medium size and a और small छोटी size. ये These तीनों 3 size की sizes पिन of pins रखनी should चाहिए always जिससे be with you, कभी so कोई that whenever साड़ी में in a sari बड़ी you पिन need a लगती है big कभी pin छोटी or a पिन small लगती है pin, हर then महिला every को woman 3 should प्रकार have की these पिन 3 रखनी kinds of चाहिए pins, बड़ी big, मीडियम medium and एंड small. छोटी। Thank you. And उसके after बाद that, ये this हम we are going शोल्डर to पे put on डाल the देते हैं। shoulder. पहले मैं we शोल्डर put पे the पिन shoulder लगाई, shoulder, उसके and बाद then बाकी after पार्ट्स that को we ले put जाए। शोल्डर पे on the लगाए shoulder. जैसे So ये that पल्लू मुझे because आपको this हाथ veil I में have to देना give है it in your इसलिए मैंने hands. पल्लू That's why थोड़ा I've लंबा kept the रखा veil a little long. See? और And फिर then शोल्डर put the पिन shoulder लगाए। pin on. Put the shoulder pin. And मुझे I देखना want है to स्टाइल see how कैसे will है it हाथ be. में। And then उसके after बाद that ये you आपको have to हाथ में keep this लेना in your है। hand. How See it how it looks. looks.
उसके After बाद that, you have turn to करना turn है it और and remove remove the the clips. clips. Oh wow. So Because क्योंकि with साड़ी के this साथ saree, a पोटली वाले that पर्स looks बहुत really अच्छे nice लगते with हैं, it. कुछ It's giving वैसा ही such look kind दे। of look. and And just set set the our border. border. Just Open it all open the border entire and how border it looks. and see how it looks. और And बहुत it's very कन्वीनियंट है अपने हाथ convenient. को मूव करना। You Move can करना, move it. you You can can आसान very से कुछ भी easily कर do सकते हैं। anything. और And then फिर after इसको ये that, border को this अच्छे से border you set have to set करिएगा। it properly. Oh, it's very stylish and very comfortable. You like it? और ये And सब we have set से set the अपन pleats घुमाते हैं because साड़ी तो they पूरी pleats भी shift घूम while जाती है। moving around, Again so we अपने have को to front get them पे in the लाना front है again. इसको। So it's done. Wow. I'm like ready for a party. I'm so lucky कि मुझे क्वीन ऑफ ड्रेपिंग कल्पना जी से साड़ी सीखने का मौका मिला। उन्होंने मुझे बताया कि रेट्रो स्टाइल में कौन सी 3 वेरिएशंस हो सकती हैं। आपने भी देखा होगा और जो कल्पना जी ने जो चीजें बताई जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। लाइक पिन्स की बात उन्होंने बताई, लीड्स की बात बताई और कितने राउंड्स होने चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और वेरिएशंस के साथ। कल्पना जी, थैंक यू सो मच। Welcome.